Okay. So this theorem will actually help us in many of the Mobius inversion formulas, which we'll be doing further. So if you see, this theorem says कि अगर मेरा f small f कोई function है जो multiplicative function है, small f of n, तो अगर मैं एक capital F of n function बनाती हूँ using small f of n. So what is the relation between capital F of n and small f of n? So capital F of n is sum of small f of d, where d is the number which divide n. So I repeat, small f को use करके मैंने capital F function बनाया. So what is this function? Capital F is summation of all f of d, where d divides n, right? So basically we have to prove that if small f is multiplicative, then capital F is also multiplicative. In particular, we have to deduce कि tau n, sigma n and sigma kn, they are also multiplicative function. Deduce मतलब इसको use करके. So if you see, what is tau of n? What is tau of n? Tau of n is sum of all the divisor, number of divisors. So जैसे ही मुझे divisor मिलेगा, मैं 1 count करूँगी. And if you see, this is 1 is a constant function. So अगर मैं कोई भी ab लेती हूँ, so f of ab, any ab, so f of ab is also 1, f of a is also 1, f of b is also 1. So from here, what is f of ab? F of ab is same as f of a into f of b. So what I mean to say is every constant function is a multiplicative function. So you see, अगर मैं ये theorem prove कर दूँ, so since 1 is also multiplicative, this function is multiplicative because it's a constant function. So therefore tau of n is also multiplicative. Beta, is it clear? Is it clear? Is it fine, बच्चे, all of you? मैम रिपीट करना है. बेटा हमें प्रूफ क्या करना है, ये तो क्लियर है. हमें ये थ्योरम प्रूफ करनी है. We have to prove that capital F is multiplicative. If small f is multiplicative, then we have to prove capital F is also multiplicative. Further हमें deduce करना है कि tau n, sigma n and sigma kn, they are also multiplicative function. Already हम ये चीज prove कर चुके हैं, but अभी हमें ये theorem की help से prove करना है. तो if you see, tau of n क्या होता है? This is sum of number of divisors. So number of divisors means जैसे ही मुझे n का divisor मिलेगा, मैं +1 कर दूंगी. तो if you see, अगर मैं इन दोनों functions को compare करूं, तो मेरे पास यहाँ पे f small f क्या है? Small f is 1. It is a constant function. So let me take any two ab, say that their GCD is 1. So f of ab क्या है? My function is 1. My function is constant function 1. So f of ab is 1. In particular, f of ab 1 नहीं होगा, f of b भी 1 नहीं होगा. So therefore f of ab is equal to f of a into f of b. So ये अगर ये हो जाए, so therefore the small f is multiplicative, where f of any n is 1. So you see, ये फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव हो गया, 1 मल्टीप्लिकेटिव हो गया, तो tau n भी मल्टीप्लिकेटिव हो जाएगा. बेटा, is it fine? Yes ma'am. Right. Similarly, अगर आप देखो sigma n क्या होता है? What is sigma n? This is summation d divides n. D, summation d divides n, sum of all the divisors, right? तो यहाँ पे अगर आप देखो, अब यहाँ पे f of again f of any number is what? If you see, अगर मैं यहाँ compare करूँ, so you see, I'll come to the proof of that theorem. Just एक बार ये सोच लो कि हमने theorem proof कर दी है. तो you see, तो हमने क्या लिया है? So, summation d divides n f of d, d. यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे f of d होता है. So f of n is what? Summation d divides n f of d. So it means f of d इस केस में क्या है? f of d is d. It means it's a identity function. So अगर मैं f of ab लूंगी तो वो क्या हो जाएगा? f of ab is what?
आइडेंटिटी फंक्शन है तो f of ab will be ab because f of d is d. अगेन a को मैं क्या लिख सकती हूँ इस केस में, f of a, b को मैं क्या लिख सकती हूँ, f of b. So you see f of ab is equal to f of a into f of b. So therefore f of d is equal to d is a multiplicative function. So आपने क्या प्रूव कर दिया, स्मॉल f इज अ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन. सो अभी प्रीवियस थ्योरम से जो हम प्रूव करेंगे क्या आ जाएगा, समेशन d डिवाइड्स n f of t. ये क्या है आपको, कैपिटल f of n. दिस इज आल्सो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन. सो समेशन d डिवाइड्स n d, दिस इज आल्सो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन. बट ये फंक्शन क्या बना, दिस फंक्शन इज नथिंग बट सिग्मा n. सिग्मा n क्या होता है, सम ऑफ द डिवाइजर्स. सो देयरफॉर दिस इज आल्सो मल्टीप्लिकेटिव. बेटा इज इट क्लियर, बेटा क्लियर है? ऐसे ही आपका थर्ड पार्ट में क्या हो जाएगा, आप f of n को n टू द पावर k ले लोगे, बिकॉज सिग्मा ऑफ k n क्या होता है, दिस इज समेशन d डिवाइड्स n d टू द पावर k. तो यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या है, n टू द पावर k. तो अगर मैं कोई f of ab लूंगी, इफ आई टेक f of ab, तो क्या बन जाएगा, ab टू द पावर k, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ, a टू द पावर k into b टू द पावर k. सो a टू द पावर k क्या है, f of a, और b टू द पावर क्या हो जाएगा, f of b. So you see, so this since f is multiplicative, so summation d divides n f of t is multiplicative by the above theorem. और ये फंक्शन मेरा क्या बनेगा, this function is nothing but my sigma k function. So sigma k is also multiplicative, right? So what is left is that we have to prove this theorem. So the proof is very easy. So what we have to prove, we have to prove capital F of a capital F is a multiplicative function. So by multiplicative function we means what, कि अगर मैं कोई भी दो नंबर्स लूं जिनका GCD 1 है, तो मुझे क्या प्रूव करना है, f of their product is equal to f of a into f of b. तो हमने कोई दो नंबर्स लिए a b जिनका GCD आपस में कितना है, 1. So by definition what is f of ab? So f of ab means summation d divides n. n की जगह क्या आ गया, ab into f of d. अब देखो d divides ab and GCD of AB is 1. इनमें कुछ भी कॉमन तो है नहीं. So इसका मतलब क्या हुआ, D will be a number of the form D1 D2 where जो D1 है वो A को डिवाइड करेगा और D2 जो है वो B को डिवाइड करेगा, एंड D1 D2 का भी कुछ भी कॉमन नहीं होगा. बिकॉज अगर देखो, अगर मेरे नंबर है 3 into 5, तो ये देखो इसका मैं कोई भी डिवाइजर लूंगी तो एक नंबर 3 को डिवाइड करेगा, एक 5 को डिवाइड करेगा, बिकॉज ये नंबर आपस में प्राइम है, इनका आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है. बेटा इज इट फाइन, अगर मैं 16 और 15 ले लूं, तो इनका कोई भी डिवाइजर उठा लो तो एक नंबर 16 को डिवाइड करेगा, एक नंबर 15 को डिवाइड करेगा. बेटा इज इट फाइन, गर्ल्स क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So it means, so f of d divides ab. इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, so in place of d you will have some d1. So d1 divides a, d2 will divide b, where d is equal to what, d is equal to d1 d2, and GCD of d1 d2 is 1. But हमें तो क्या given है, that small f is multiplicative function. तो अगर किन्हीं दो numbers का GCD 1 है तो हम इसको break कर सकते हैं. So this is what, f of d1 d2 will become what, f of d1 into f of d2. So again if you see, एक function d1 का है, एक function d2 का है, so they are separate functions. So I can separate these summations also. So what I'll have, summation d1 divides a f of d1. Similarly summation d2 divides a, ये a नहीं है please, ये b आएगा, f of d2. So if you see, what is this, summation d divides n f of b. तो यहाँ पे n की जगह क्या है, a है, summation d1 divides a f of d1. So you see, by definition this is nothing but what, capital F of a, and by definition this second function is what, capital F of b. So what you have proved, f of ab is equal to f of a into f of b. So therefore what we have, the given function is a multiplicative function. Beta, is it clear? Girls clear है? Yes, ma'am. And if you see this, इसकी another form is he is writing. So as I told you, whether you write b
or you write n by d. It's the same thing. So at times हम इसको ऐसे भी use करते हैं. So f of n summation d divides n. f of d ना लिख के हम यहाँ पे n by d लिख देते हैं because they are the same numbers. Only thing is their order is changed. Right? Now, I think theorem 4 you can handle yourself. So theorem 4 you can go through yourself. You can ask me the doubts. Maybe you can mark this theorem. After your midterm, you can do this theorem. You can ask me the doubt. I mean, there is nothing in this theorem. Right? Let me take one of these questions. But is it fine? You can do that theorem. Easy है, कुछ भी नहीं है उसमें. You can mark that theorem. After your midterm, you can do that. And if you have any doubt, you can ask me. Okay, let us do both these questions. So what the first question says, prove that sigma of minus kn is what? It is n to the power k sigma of kn. Right? So हमें n की पावर में चाहिए, तो हमें अगर आप देखो यहाँ पे n लेके आना है, तो कहीं ना कहीं से मैं अगर n by d2 so on up to n by dk ऐसे कर दूं, तो मेरे पास n का प्रोडक्ट आ जाएगा. So let us apply this. So say d1 d2 dr, they are all the positive divisors of n. So we know n by d1, n by d2, n by dr are also the positive divisors, right? So you see, so what is sigma of minus kn? Sigma of minus kn कितना बन जाएगा? So this is sum of the divisors with the power minus k. So n by d1 to the power minus k, n by d2 to the power minus k, and so on, n by dr to the power minus k. Right? So if this is fine, so अब पावर नेगेटिव है, so पावर को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? हम रेसिप्रोकल ले लेंगे. So moment you will take reciprocal, what this will become? This will become d1 upon n to the power k, d2 to the power n, all and so on. Right? And so on. So that's it. So what this will become? अगर आप देखो नीचे एलसीएम क्या आ गया? n to the power k, ऊपर क्या बन गया? d1 to the power k plus d to the power k plus so on up to dr to the power k. So n to the power k तो बना गया n to the power minus k. क्या बच गया? d1 to the power k plus d2 to the power k. So ये क्या हो रहा है? Sum of all the divisors of n with the power k. So ये क्या बन गया? Sigma of n. Okay. But is it fine? यही प्रूफ करना था आपको. Is it clear, बच्चे? Yes, ma'am. Right. So what about next question? So next question says you have to take the product. So pi means product. So you have to take the product of all the divisors d, which divide n. Right. So product किसका लेना है? d to the power d plus n by d. So we have to prove this is equal to n into sigma to the power n. So now suppose हमें आइडिया मिल रहा है यहाँ से, यहाँ पे d भी है, यहाँ पे n by d भी है, तो हमें दोनों ही लेने पड़ेंगे. So suppose n d1 d2 dr, they are the positive divisors of n. So obviously n by d1, n by d2, n by dr is also the positive divisors of n. तो sigma of n क्या हुआ? या तो आप इनका सम ले लो n d1 d2 dr, या फिर आप इनका सम ले लो. So n by d1 plus n by d2 plus so on up to n by dr. Right? So what is left hand side? Left hand side is this. So what is this? d1 to the power d1 plus n by d1, d2 to the power d2 plus n by d2, and so on up to dr to the power dr plus n by dr. Is it fine, बच्चे? Is it fine? So now what we will do, since हमें n पिक्चर में लेके आना है, तो अगेन चाहे आप d1 लिखो, d2 लिखो, dr लिखो, या n by d1 लिखो. So what we did, हमने जहां जहां d1 है उसकी जगह हमने n by d1 कर दिया. So you see what will happen. So d1 नीचे n by d1, d2 के नीचे n by d2, dr के साथ n by dr. ऊपर भी क्या हो गया? ऊपर this is d1, तो d1 की जगह लिख दिया n by d1, और इधर n है, नीचे d1 है, फिर d1 की जगह लिख दिया n by d1. एंड ये चीज हमने हर जगह की. सो व्हाट विल हैपन? n विल कैंसिल, तो ऊपर तो एक तरह से सेम ही रहेगा. सो d1 plus n by d1, d1 plus n by d2 एंड सो ऑन. अब अगर देखो ये सारा n की पावर्स आ गई. सो n to the power d1 plus n by d1, n to the power d2 plus n by d2, n to the power dr plus n by dr. और नीचे d1 d2 dr है. सो व्हाट यू हैव? d1 to the power n, d1 plus n by d1, d2 to the power n
d2 plus n by d2 and so on, dr to the power n plus dr. So now you see, ये तो आपका वही चीज बन गई जो आपने प्रूव करना था. उसको हमने प्रोडक्ट को p माना था, so this is p. एंड ऊपर क्या बन गया, bases are same, powers can be added. So d1, so you see d1 plus d2 plus dr, ये भी सिग्मा n बन गया. एंड d1 एंड d2 एंड dr, इसका सम भी सिग्मा n बन गया. So p को उधर भेज दिया तो p स्क्वायर क्या बन गया, n into 2 of sigma n. So moment you will take under root, what will happen? Moment you will take under root, so what you will get, p is equal to n to the power sigma n. यही प्रूफ करना था बेटा हमने, यही प्रूफ करना था बच्चे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is it fine, all of you? Yes, ma'am. Okay. So again, this is one small definition, right? So what is a perfect number? So basically, वो number जिसका sigma of n is nothing but twice of n, that number is known as perfect number, right? So here are some of the examples of perfect numbers. So you can see sigma of 6 is 12. So this is 2 into 6. Sigma of 28 will be 56. So this is 2 into 28. So all these numbers are perfect numbers, right? So there are small results in perfect numbers. You can very much easily see. So if 2 to the power k minus 1 is prime, then 2 to the power k minus 1 into p is a perfect number. तो अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है this number is a perfect number, right? So say n is this number, say n is this number, so n is this number, so n is what, n is 2 to the power k minus 1 into p. और p की हमें वैल्यू कितनी गिवन है, p is 2 to the power k minus 1. So this is my n, so eventually this is my n. So what we have to prove, we have to prove sigma of n is equal to 2n. So we will just apply the definition. So sigma of n कितना बन गया, sigma of 2 to the power k minus 1 into p. तो बेटा अगर आप देखो what is p, just p is what, 2 to the power k minus 1. So 2 की power k तो even है, so even minus 1, so p is odd. So p is odd. और इसका आप जीसीडी, आप इसके साथ कौन सा नंबर है, 2 to the power k minus 1, so that is even. So obviously these two numbers will be what, इनका जीसीडी आपस में 1 होगा. और हमने किया है that sigma is what, that sigma is multiplicative function, so I can break. So sigma to the power 2k minus 1 into sigma of p. अब अगर आपको याद हो, हमने सिग्मा का फॉर्मूला किया था, तो सिग्मा ऑफ 2 to the power k minus 1 k ऊपर है, बस -1 ऊपर है. So, अगर आपको याद हो सिग्मा ऑफ एनी p टू द पावर k, तो हम क्या करेंगे, प्राइम की एक पावर बढ़ जाएगी. तो अभी यहाँ प्राइम की पावर कितनी है, k minus 1, 2 की पावर है k minus 1, so k minus 1 plus 1 कितना हो गया, k 2 to the power k minus 1 over 2 minus 1. तो ये तो हो गया सिग्मा ऑफ दिस नंबर. एंड सिमिलरली व्हाट इज सिग्मा ऑफ p, sigma is what, sum of the divisors, and prime number के दो ही divisors होते हैं, number and 1 itself. So you see this is p plus 1. So अगर आप इसको multiply कर दो, what you will get, so 2 to the power k minus 1, p क्या था, 2 to the power k minus 1, तो जब आप 1 plus करोगे तो 2k cancel हो गया. So that's it. अगर आपको perfect show करना है तो आप 2 बाहर ले आओ, तो क्या बच गया, 2k की जगह क्या बच गया, 2k minus 1 into 2 to the power k minus 1. So you see this is your number, this is n. So sigma of n is equal to 2n. So obviously this number is a perfect number. Beta, is it fine? बच्चे clear है? Yes, ma'am. Now the next question is, again it's easy. Every even perfect number is of this type. जो आपने ऊपर टाइप करी है, so actually even every even perfect number is of this type, right? So let n be any even perfect number, right? So obviously n कैसा होगा, so n will be 2 into, so it's a perfect number, so sigma of n is equal to 2n. Is it fine? So sigma of n is equal to 2n. Now we have to show that every even perfect number, so number has to be even, so n is even and n is perfect.
So n perfect का मतलब क्या हो गया, sigma of n will be equal to 2n. And since n is even, so n will be some power of 2 into some odd number. Because even number है तो उसमें से आप 2 की पावर्स बाहर निकाल सकते हो. And further, if you see GCD of 2 raised to power a and b will be 1. Because this is even, this is odd. हमने जितनी 2 की पावर्स पॉसिबल हो सकती थी हमने बाहर निकाल ली. But is it fine? बच्चे क्लियर है? Yes, ma'am. So please, there is a mistake. This is not b. This should be n. This should be n. N is of the form 2a into b. So now, what is given to you? Sigma of n is equal to 2n. So sigma of 2a into b will be what? 2n. Again, these two numbers GCD is 1, so I can break. So sigma of 2 to the power a, sigma of b. और यहाँ क्या बन गया? 2 to the power a plus 1 into b. तो अभी हमने फॉर्मूला किया था sigma of 2 to the power a कितना हो जाएगा? 2 to the power a plus 1 minus 1 over 2 minus 1. Right? B I don't know. B is any odd number, so this is sigma of b. यहाँ क्या हो गया? 2a plus 1 into b. So अब sigma of b over b. Sigma of b over b की वैल्यू कितनी आ गई? So 2 to the power a plus 1 over 2 to the power a plus 1 minus 1. Is it fine? Is it fine, बच्चे, all of you? बेटा यहाँ से क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? Yes, ma'am. बेटा is it fine? Yes, ma'am. Now if you see जो आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर इज 2 to the power a plus 1 और न्यूमरेटर इज 2 to the power a plus 1 minus 1. So just consecutive terms हैं, so it means this term is even and this term is odd. So obviously इस जो हमने ये फ्रैक्शन ली है इसमें कोई भी कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है. So जो कैंसिलेशन हो सकती थी वो हमने कर दी है. तो इसका मतलब यही है. So this is something of the sort कि मैं आपको एक फ्रैक्शन दूं, से मैं आपको बोलूं 8 over maybe 60. So आपने क्या किया? So this is what 4 2 पे क्या 30, ये actually 4 2s are 4 2, this is 50. So अगर आप देखो this term is even, this term is odd. तो इसका मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है अब इसमें. तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं 8 is some lambda, जो कॉमन आपने काट दिया है. So some lambda into 2 and 60 is also some lambda into 15. Because और further cutting नहीं हो सकती. Right? So you see, और यहाँ पे lambda is 4. So similarly, sigma b is what? Some lambda into 2a plus 1 and b is what? Some lambda into 2a plus 1 minus 1. अब यहाँ से we will just find the value of lambda. Moment you will find the value of lambda, we will get the result. So basically, lambda should turn out to be 1 because हमें वही prove करना है. बेटा clear है सबको? यहाँ तक कोई doubt, girls? No, ma'am. Okay, so now we will prove lambda is equal to 1. Again, let us assume lambda is not equal to, lambda is greater than 1. Right? हमने क्या लिया था? हमने sigma of what was in the numerator? Sigma of b हमने लिया था कितना? Lambda into 2 to the power a plus 1. और नीचे हमने b कितना लिया था? b is lambda to the power 2 to the power a plus 1 minus 1. तो अगर आप यहाँ से देखो हमने क्या assume किया है? We have assumed lambda is greater than 1. अब अगर आप देखो इसका मतलब क्या हो गया? Lambda divides b. अब इसका मतलब lambda b को डिवाइड करता है. It means b के 3 डिवाइजर्स तो आपको दिख गए. b has minimum 3 divisors. So that is 1, b itself and lambda. तो यहाँ से क्या आ गया? Sigma of b will be greater than or equal to 1 plus lambda plus b. बेटा यहाँ तक clear है? So I'll do from here only. So 1 plus lambda plus b. तो हमने क्या किया? Sigma of b की वैल्यू डाल दी और इधर से हमने b की वैल्यू डाल दी. Right? So what you get? Moment you will multiply, we'll get. So this is lambda of 2a plus 1. So this is greater than or equal to 1 plus lambda. Again अगर आप मल्टीप्लाई करोगे lambda of 2a plus 1 minus lambda. So lambda lambda will cancel. इधर से lambda of 2a plus 1 will cancel. So you will get 0 is greater than or equal to 1, which is contradiction. So therefore lambda is 1.
So what we get? Order of B is this, sigma of B is this, and B is this. Right? So therefore, if you see sigma of B is nothing but B में 1 plus कर दो, you will get this. So this sigma of B is B plus 1. हमने सिर्फ इसका मतलब sigma of B is what sum of the divisors. तो B के दो ही divisors हैं, 1 and B itself. So therefore B has to be prime itself. So it means your number is what? Your number is only of that form, P into some number. Beta, is it clear? Is it fine? Yes, ma'am. Right? I think बाकी मैंने आपको PDF नहीं भेजा है. So I'll stop here. Is it fine, बच्चे? We'll continue from here tomorrow. Any doubt?